Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunivari Pashita Distani Om Jnanatimarandasya Gyananjana Shalakshana Chakshu Vitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, thank you for allowing me to share some more Srila Prabhupada nectar. First of all, how many here this morning can understand English? Okay, fair amount, majority. So the way we're going to do this, excuse me, I'm getting over a cold, so bear with me. So this will be, the subject matter will be a continuation of last night's presentation. Where we featured Srila Prabhupada's wit
and humor. जहाँ पर हमने श्री प्रभुपाद के मजाकिया स्वभाव और अनोखे अनुभव को दर्शित किया था. The way we'll do it this morning, there are maybe, I haven't counted, but 10 or 12 individual devotees, and we will play each one through its entirety, and then Vamsi Hari will translate it. There's only one story that is longer in nature. It's actually one that I spoke about yesterday, and that one we will stop in phrases because it's harder to remember all of this story that's 4 or 5 minutes in length. आज सुबह का इस तरह से हम करेंगे कि करीब 10 से 12 वीडियो चलचित्र हम चलाएंगे और फिर उसको चलचित्र अंग्रेजी भाषा में है, इसलिए चलचित्र के बाद उसको हिंदी में उसको रूपांतरित करेंगे. So just as a review, we understand that Srila Prabhupada is the Acharya and the Guru. Guru means heavy. हम समझते हैं कि श्री प्रभुपाद आचार्य हैं और गुरु हैं. गुरु का मतलब भारी. But Srila Prabhupada had 26 qualities because he is a Vaishnava, a perfect gentleman. श्री प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनके अंदर पूरे 26 गुण थे. And another side of Srila Prabhupada, he has many facets, but one facet that a lot of people, devotees and general public, don't understand, that Prabhupada had a very personal side which was exhibited by his wit and humor. और श्री प्रभुपाद के व्यक्तित्व के बहुत अलग-अलग चित्रण थे. बहुत सारे लोग प्रभुपाद के उस व्यक्तित्व के उस भाव को नहीं समझ पाते हैं जहाँ पे प्रभुपाद का पूर्ण व्यक्तित्व निकलता है. उनके एक भक्त के साथ संबंध स्थापित करने से, उनके मजाकिया स्वभाव से. So let's begin, and then if you want, after each story, if anybody has a question or a comment, we can allow for that. तो अभी हम प्रारंभ करते हैं. हर वीडियो, हर कहानी के बाद अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं. If there's enough time, because the entire length of this particular stories is 27 minutes. तो सभी कहानियां मिला के 27 मिनट की है. तो अगर पर्याप्त समय रहेगा तो प्रश्न उत्तर भी हम वर्णित कर सकते हैं. So maybe you can be judge of the clock when we need to stop, if we can allow or not allow any more questions or comments. So don't be shy. If a story resonates with you, I would like to know if it's significant in any way, and your maybe even further appreciation of Srila Prabhupada. तो अगर कोई कथा आपसे मिलती-जुलती है तो उससे आप बुरा मत मानिएगा. एक प्रभुपाद की कुछ कथाएं हैं जो उन्होंने बताई. So let us begin. Said, I don't remember what they were reading, but he goes, yes, in India, all the girls must be married. And if a suitable husband cannot be found, then they are married to a tree. So we all, that reading kind of, I wonder what kind of tree they are married to. Lemon tree. And there was the devotee girl from India, and she goes, that was a joke. I had no... Oh. All right, upon popular request, we'll start it from the beginning. Tell me when it's okay. Ready? Okay.
for shameless promotion, in the far left of the screen is yours truly, many years ago, 1975. पीछे जो भक्त का चेहरा दिखाई दे रहा है वो प्रभु जी ने 1975 में. And between myself and Prabhupada is Brahmananda Prabhu. प्रभु जी और प्रभुपाद के बीच में ब्रह्मानंद प्रभु खड़े हो गए. They were reading Krishna book, and Prabhupada said, I don't remember what they were reading, but he goes, yes, in India, all the girls must be married. And if a suitable husband cannot be found, then they were married to a tree. So we were, as we're reading the Bible, I wonder what kind of tree they married the women to. And there was a devotee girl from India, and she goes, that was a joke. I had no concept that Srila Prabhupada could joke. You know, when I saw him, I had butterflies in my stomach. It was like so serious, you know. But that was a joke. तो इस कहानी में भवतारिणी माता जी बता रही हैं कि प्रभुपाद ने एक बार कुछ भक्त लोग कृष्णा पुस्तक पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद ने उसके बीच में कहा कि भारत में हमेशा लड़कियों की हमेशा शादी की जाती है, परंतु अगर उनको ठीक लड़का नहीं मिले पति के लिए तो उनकी कभी कभी पेड़ों से शादी हो जाती है. तो सारी जो माताएं थी वो समझ नहीं पाई और उनको समझ में नहीं आता किस प्रकार के पेड़ से शादी होती है, क्या होता है. तो वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, उसने बोला प्रभुपाद इस तरह से जोक कर रहे हैं. तब उनको अनुभव नहीं था कि प्रभुपाद जोक भी करते हैं, क्योंकि सभी ने प्रभुपाद को बहुत गंभीर तरह से देखा था. तो इस प्रकार से वो अपना अनुभव बता रहे हैं. Very good. So I don't know if that really needs any comments, but it's quite obvious that that obviously fits the subject matter of today's class. तो ये जो प्रभु जी ने जो ये कहानियाँ चुनी हैं, ये आज के सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से चुनी है, विशेष कहानी. Unless someone wants to make a comment. अगर इस कहानी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं. Oh, okay. One time we were going to Buckingham Palace, so we were very proud of that time that one boy joined was part of the king's guards. You know, the guys who wear the big furry hats. So as we were passing the palace, we were in a taxi with Prabhupada. So we looked over and he said, Prabhupada, one of the queen's personal guards has joined. And then Prabhupada said, oh, so what about the queen? So ये कहानी है जब एक मंदिर में कहाँ पे लंदन तो एक लंदन में इस प्रकार से कहानी हुआ था कि एक बार जो लंदन की महारानी है उनके पर्सनल गार्ड ने इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया था. तो सब भक्त लोग बहुत खुश थे. तो एक बार जब वो जा रहे थे तो एक भक्त ने जब क्वीन के पैलेस के सामने से निकले तो एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद क्वीन के पर्सनल गार्ड ने हमें ज्वाइन कर लिया है. तो प्रभुपाद ने सिंपली पूछा कि क्वीन ने ज्वाइन कर लिया. So I'm just realizing now I've taken from last night's class or presentation, and these are repeats, 2 or 3 are repeats from what I told, but from the original devotee. तो कल रात के जो प्रभु जी ने बताया था उसी थीम पर प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ कहानियाँ आपको दूसरी बार सुनने मिल सकती हैं. Taxi with Prabhupada. So we looked over and said, Prabhupada, one of the queen's personal guards has joined. And then Prabhupada said, oh, so what about the queen? So people would, I saw his wig, and people would say, oh, Swamiji, you look so nice today. And he said, just today. He would be like that, best. प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. तो प्रभुपाद यही उत्तर दिए केवल आज ही अच्छा लग रहा हूँ. And here's Hridayananda. Prabhupada came to Gainesville in 1971, which was the end of July. Wonderful visit. He was being interviewed. He arrived, he sat in the Vyasam we made for him.
And he gave a beautiful lecture, then he was taking questions. There was one girl there, I guess that was 1971, at that time she was being approved. And in a somewhat challenging tone, she said to Prabhupada, I see that you are mostly young people here, why is that? So Prabhupada immediately shot back, why do you have mostly young people in your university? And she was so much caught off guard that she actually dropped her pencil. And she sort of, groped for an answer, stuttering, and said, well, that's the age of education. He said, yes, therefore that's the age of Krishna consciousness. एक बार प्रभुपाद गेंसविल में गए थे जुलाई 1971 में, तो प्रभुपाद वहाँ पे आए और उन्होंने बहुत अच्छा कक्षा दिया। उस कक्षा के बाद जब प्रश्नोत्तर का समय चल रहा था तो एक लड़की ने चैलेंजिंग तरीके से प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपकी संस्था में केवल जवान लोग ही क्यों रहते हैं, केवल यंग लोग क्यों रहते हैं? तो प्रभुपाद ने तुरंत उससे प्रश्न किया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में केवल यंग लोग क्यों रहते हैं? तो इस प्रकार से प्रभुपाद का प्रश्न सुन के वो थोड़ी घबरा गई और उसके घबराने से उसके हाथ में जो पेंसिल थी वो पेंसिल नहीं गिर गई और कुछ देर तक वो सोचते रहे कि आंसर क्या, उत्तर क्या होगा। उसके बाद उसने बोला कि ये आयु जो है ये तो शिक्षा की आयु। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, इसीलिए कृष्ण भक्ति में भी जवान लोग रहते हैं क्योंकि ये आयु शिक्षा की आयु। Another such exchange like that, where a few days before I took sannyas, Prabhupada was being interviewed by a reporter in his quarters in LA, and he was something about Hinduism. He said, well, isn't it in India that old people take sannyas? Why do you think sannyas to young people? So Prabhupada shot back, what does it mean to be old? The man had no answer. Prabhupada said, old means about to die. Can you say that I'm older than you? Can you say that you're not going to die before me? Who can you say? And he couldn't answer it. He said, therefore we're giving sannyas. तो ये महाराज के संन्यास के समय प्रभुपाद लॉस एंजलिस में अपने क्वार्टर में बैठे थे और एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू करने के लिए आए। रिपोर्टर हिंदू धर्म के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि हिंदू धर्म में तो संन्यास वृद्धावस्था में दिया जाता है, तो आप जवान लोगों को संन्यास क्यों दे रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न किया कि आपको पता है कौन वृद्ध होता है, कौन जवान होता है? तो उस रिपोर्टर को उत्तर नहीं पता था, उसने बोला था मुझे नहीं पता। तो प्रभुपाद ने बोला कि वृद्ध का मतलब होता है मृत्यु के पास है, जिसकी मृत्यु जल्दी आने वाली है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ या आप मुझसे ज़्यादा बूढ़े हैं? आप मुझसे पहले, आपकी मृत्यु मुझसे पहले होगी या मेरी मृत्यु आपकी पहले होगी? तो रिपोर्टर कुछ उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए प्रभुपाद ने फिर बोला कि इसीलिए हम सब इनको संन्यास देते हैं क्योंकि वृद्धावस्था की कोई आयु नहीं है। And so I was always seeing him chanting his rounds. And the one time I was in his quarters hearing he was working, and Prabhupada was chanting, and he was sitting, and I was just sitting in front of him, and he was chanting. He pulled down his counter bead, and he said, there, he said, now I have finished my 16 rounds. I can do any damn thing I want. ये सुकृति प्रभु बता रहे हैं, प्रभुपाद एक और न्यू द्वारका में लॉस एंजलिस में बैठे थे और प्रभु जी प्रभुपाद के सामने बैठ के जप कर रहे थे और प्रभुपाद भी वहाँ पे माला करते थे। तो 16 माला खत्म करने के बाद प्रभुपाद ने अपनी काउंटिंग की जो भीड़ है उसमें अपनी माला कंप्लीट की। तो बोला कि अभी मेरी 16 माला खत्म हो गई, अभी मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। Any comments, questions on these last two? इन दो वीडियो में से अगर किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं। Are these pretty much new stories for everybody? क्या ये बहुत नई कहानियाँ हैं, आपने पहले सुनी हुई है? He's asking what are the 26 qualities of Prabhupada? I'm sorry, I couldn't hear you. What are the 26 qualities of Prabhupada? What are the 26 qualities of a Vaishnav? I'm in your library. श्रीमद् भागवतम हमारे मंदिर में, आपके घर में है? Or do you have a Chaitanya Charitamrita?
Yes. You will find them there. उसमें आपको मिल जाएंगे. Read Srila Prabhupada's books. They were doing a fire yoga. And it was written down in the temple or something. Some temple, I'm sure about that. The temple had already been established. They were doing a fire yoga. And one of these, I think it was one of Srila Prabhupada's godbrothers, who was in the middle of the fire yoga. And he leaned over to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, they're doing it all wrong, they're doing it all wrong. And Prabhupada leaned back and he looked at him very calmly and he said, that's all right, they're just practicing. एक बार वृंदावन मंदिर में एक यज्ञ चल रहा था और प्रभुपाद भी वहाँ पे उपस्थित थे. प्रभुपाद के गुरु महाराज वहाँ पे उपस्थित थे. तो प्रभुपाद के गुरु महाराज ने प्रभुपाद के पास आके बोला कि प्रभुपाद ये, क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद ये तो सब लोग गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत, ठीक तरीके से नहीं कर रहे. तो प्रभुपाद ने उन शिष्यों की तरफ मुस्कुरा के बोला कि कोई समस्या नहीं है, वो तो जस्ट अभ्यास कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Prabhupada would always defend his devotees. प्रभुपाद हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते थे. A reporter asked, one challenging reporter said, so what do? You walk on water? You turn water into wine? Or he said, there can be a beautiful woman here, naked. You will be attracted. I will not. But then इसी तरह से एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि आप कौन सा जादू दिखा सकते हैं? आप पानी के ऊपर चल सकते हैं और बाकी और कोई जादू दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पे अगर एक सुंदर स्त्री नग्न अवस्था में भी होगी, उसको देख के आप आकर्षित होंगे, परंतु मैं आकर्षित नहीं होगा. Other reporter asked, what's the purpose of human life? Prabhupada said, to enjoy. Enjoy in this way, or enjoy with Krishna. But the answer was like that. I would have said, to surrender to the spiritual master, follow the race, give up reading, do this, become to enjoy. इसी तरह से एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एंजॉय करना, सुख भोगना. और प्रभुजी बता रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बोलता कि आपको मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, शांति पालन करना होगा, भगवान को सरेंडर करना होगा. तो प्रभुपाद ने सिंपली बोला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है एंजॉय करना, कृष्ण के साथ एंजॉयमेंट करना. Once taking a train with Prabhupada, and there might have been 3 or 4 devotees with us, and someone had given Prabhupada a pot of sweet balls. So just before the train took off, Prabhupada opened those sweet balls up and he started to give them out. He took one and took. And so one devotee, he said, Prabhupada, are those offering? He said, oh, you don't have to have them. You don't have to have them. And others like, तो एक बार एक ट्रेन में जब प्रभुपाद जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और प्रभुपाद ने अपने पास से एक गुलाब जामुन का डिब्बा निकाला और उसमें से एक स्वयं लिया और बाकी भक्तों को देना प्रारंभ किया. तो एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ये भूख लगाया गया है कि नहीं? प्रभुपाद बोला, तुम्हें इसको लेने की जरूरत नहीं है. thing connects with sweet balls. In the early days, Siddhanta was always trying to impose austerities on everyone. That was his motto. At 26th Avenue, and every Sunday, of course, they cook a lot of sweet balls, and there'd be a lot left over. And the routine was that at breakfast time, you got those sweet balls with the cereal, which generally was farina. And you drop them in the hot farina. It was really a very, delightful thing to have for breakfast. But Kirtananda insisted that we can't have more than 2. So it became an issue at Ishtagosi. We would discuss it and haggle over it. But it couldn't be resolved, so finally it came to Prabhupada's attention. Everybody assembled. And it was laid out before Prabhupada. So Prabhupada said, yes. So everyone can have as many sweet balls as they like,
but Kirtananda can only have two. That's his sense of humor. तो कीर्तन स्वामी महाराज का हमेशा से ऐसा स्वभाव था कि वो तपस्या की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे और भक्तों को भी इस तरह से बताते थे। तो उस समय रविवार को जो फीस्ट होता था उसमें बहुत सारे गुलाब जामुन बनते थे और गुलाब जामुन जो बचते थे वो अगले दिन जब नाश्ता होता था उस समय दिए जाते थे भक्तों को। तो कीर्तन महाराज ने बोला कि अभी से ऐसा नियम बनाएंगे कि 2 से ज़्यादा गुलाब जामुन किसी को नहीं मिल सकते। तो उसके लिए कुछ भक्त तैयार नहीं हुए, इच्छा कुछ नहीं लगी, वो बात हुई और जब वो बात बढ़ी गई तो प्रभुपाद के पास वो बात पहुंची। तो जब प्रभुपाद से ऐसा पूछा गया तो प्रभुपाद ने बोला कि सारे भक्त जितने गुलाब जामुन चाहे उतने खा सकते हैं, कीर्तनानंद केवल 2 खा सकते हैं। Did everyone know that Srila Prabhupada had this side to his character? आप सभी लोग पहले से जानते थे कि प्रभुपाद के चरित्र में इस प्रकार से स्वभाव भी है, मजाक के जैसा स्वभाव। Some people say, you know, the photo of Srila Prabhupada when he came to America, he's holding his danda with a burgundy background. You know this photo? Many devotees see it. He's very grim, very serious face. बहुत सारे भक्त प्रभुपाद का एक चित्र है जिसमें प्रभुपाद का सन्यास लेने के पीछे रहता है और पीछे एक बैकग्राउंड में रहता है। तो उस पिक्चर में प्रभुपाद बहुत गंभीर लगते हैं। तो बहुत सारे भक्तों को ऐसा देख के लगता है कि प्रभुपाद तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत सीरियस रहते हैं। So generally, new devotees or members of the public see that photo and they think Prabhupada is very grave and very serious, which he is. But when Guru Das asked him about that, what he was thinking at the time of that photo, Srila Prabhupada said he was in ecstasy, being able to fulfill the order of his spiritual master. तो वो उस पिक्चर को जब कोई भक्त देखते हैं तो सोचते हैं प्रभुपाद बहुत गंभीर है। तो गुरुदास ने प्रभुपाद से एक बार पूछा कि जब वो पिक्चर उस अवस्था में आप खड़े हुए थे तो आपके मन में क्या विचार था, आप क्या सोच रहे थे? प्रभुपाद ने बोला मैं सोच रहा था कि मेरे गुरु का जो सपना था, उनकी जो आज्ञा थी वो भी पूरी होने जा रही थी। So that is an aspect. It's called gravity. That's one of the 26 qualities of a pure devotee. And what gravity means is that you never know the mind of a pure devotee. व्यक्तित्व का ये किस्सा कहलाता है, इसको गंभीरता बोला जाता है। ये भी वैष्णव के 26 गुणों में से एक है। इसका मतलब है कि शुद्ध भक्त के मन के अंदर जो चल रहा है वो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। One time, Hari, his alarm clock went off. And Papa said, "What do you guys have?" He said, "Oh, that's the alarm clock for Prabhupada." Papa said, "Oh, who's in danger?" And I remember looking at Hari and being like, "Wow, I preached that thing and sent the humor." We just couldn't believe it because we never heard Prabhupada use a play on words or pun or sarcasm. एक बार हरीश्वरी गुरु की अलार्म घड़ी बज गई और जब प्रभुपाद को मैं आवाज़ सुनी तो प्रभुपाद ने पूछा उनसे कि ये क्या, कौन सी आवाज़ थी? तो उन्होंने बोला कि अलार्म बजा था। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि कौन खतरे में है जिससे अलार्म बज रहा है? तो ये सुन के हरीश्वरी गुरु प्रसन्न मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे आध्यात्मिक गुरु मजाक भी करते हैं, क्योंकि उन सभी ने प्रभुपाद को गंभीर अवस्था में देखा। The question I remember was Tripurari. There had been this discussion about shaking the hands of the karmis when distributing books, that you're getting karma or something. And Tripurari mentioned it to Prabhupada. Prabhupada said, "I hope not." एक बार त्रिपुरारी स्वामी महाराज इस प्रकार से बात कर रहे थे कि कभी हम पुस्तक वितरण करते समय लोगों से हाथ मिलाते हैं तो उस हाथ मिलाने से कर्म का ट्रांसफर
कर्म का आदान प्रदान तो नहीं होता है। इस तो उन्होंने ये प्रश्न प्रभुपाद से भी पूछा और प्रभुपाद ने केवल इतना उत्तर दिया कि आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं हो। One time I was serving Srila Prabhupada in Vrindavan, and as his custom was, after he would give evening darshan, he would distribute prasadam. So as a servant, he would nod and he would run up and usually have a jar of sweet balls on his desk. So I came up, he was giving darshan in the evening, his vasis were there, so many were there, and he nodded. So I went up and I opened the jar, and there were ants all over the sweet balls. So I said, Srila Prabhupada, the ants are eating the sweet balls, thinking I couldn't pass them up. Srila Prabhupada looked at me and said, it is okay, you do not eat very much. एक बार वृंदावन में प्रभुपाद का इस प्रकार से था कि शाम के समय प्रभुपाद दर्शन देते थे। तो दर्शन के बाद सभी जो भी वहाँ पे रहते थे ब्रजवासी और जो भक्त रहते थे उनको प्रसाद देते थे। तो प्रसाद में सामान्यतः रसगुल्ला गुलाब जामुन रहता था। तो कुलाती हुए जब उस सेवा के लिए गए प्रभुपाद को गुलाब जामुन का वो देने के लिए पात्र देने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी चीटियाँ हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इसमें बहुत सारी चीटियाँ हैं गुलाब जामुन से। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कोई समस्या नहीं, वो ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं खाती है, मुझे दे दो उसको। We had stopped near, it was like a tank, you know, a concrete tank with two crocodiles. And the problem knew which was the male and which was the female. He was able to distinguish. I don't know how. You know. But he was saying, this is the male. And just at that time, he opens his huge mouth. And as he's doing this, Prabhupada says, oh, no food. It was very, just very timing. And then he said, he is in my place. Prabhupada's humor. एक जगह पे सीमेंट के दो टैंक थे। एक टैंक में नर मगरमच्छ था, दूसरे टैंक में मादा मगरमच्छ था। और प्रभुपाद को पता नहीं कैसे पता था कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, उनको समझ में आ गया था। क्योंकि हम जब उनको देख रहे थे उसी समय नर मगरमच्छ बाहर निकला, उसने अपना मुंह खोला और प्रभुपाद ने जस्ट मुस्कुराते हुए बोला कि कोई भोजन नहीं है, इसको भूख लगी है और ये भोजन के लिए। So, some morning walks, there's a picture that many devotees will remember where I'm standing behind Prabhupada, Vidayananda Maharaj is there, Janavir Prabhu is there, many other senior devotees are there, Prabhupada, and we're all laughing. Vikram Swami is there. Everybody's laughing. Personally, I'm laughing. That shot is there in the River Picture. It's still, and it was also published in BTT. What were we all laughing about? So we were walking in Santa Monica, just north of the pier, and Rameshwaran was describing book distribution in South America. How people were getting letters from people who had received books, who were appreciating books, who were living in places where there were no temples. So he was very impressed by that. The book distribution had gone so far and wide throughout South America that even people getting books where there are no temples. So even just glorifying Vidayananda Maharaj. Just going on, just see Vidayananda Maharaj's potency, he's infusing book distribution, he's so wonderful. And Ramakrishna Maharaj, I believe Ramakrishna Maharaj was there. And as we know, that was 1976, that was the height of the competition with Radha Damodar and other temples. And Prabhupada had incited this very fierce competition, and Tamal Krishna Maharaj wanted to be number one, and Prabhupada knew that he wanted to be number one. So, as Rameshwar was going on glorifying Prabhupada, and glorifying Vidayananda Maharaj, again and again and again, Prabhupada stopped and said, don't speak so loudly, Tamal will have a heart attack. And everyone was cracked up, and that's that picture. And Prabhupada himself was laughing. तो ये बहुत प्रसिद्ध पिक्चर है जो कि बहुत सारे भक्तों ने देखी है, जिस पिक्चर में महात्मा गुरु हैं और विद्यानंद महाराज हैं और कई वैश्य भक्त हैं और सभी लोग जोर से हंस रहे हैं
तो बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता है कि ये पिक्चर में क्या बात हो रही थी, सभी लोग हंस रहे थे। तो इस समय वास्तविकता में रामेश्वर प्रभु उस समय नॉर्थ अमेरिका में पुस्तक वितरण के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से पुस्तकें इतनी वितरित हो रही हैं कि जहाँ पे इस्कॉन के मंदिर नहीं, वहाँ भी बहुत सारी पुस्तकें पहुँच रही हैं और उनको लोगों के पत्र भी मिलते हैं कि उनको कितना फायदा हो रहा है। और इस तरह से वो हृदयानंद महाराज को बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि हृदयानंद महाराज इतना ज़्यादा पुस्तक वितरण इतने अच्छे से कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद उसी समय उनको रोक के बोले कि बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन मत करिए हृदयानंद महाराज का, अगर अन्यथा कमाल कृष्ण महाराज को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि कमाल कृष्ण महाराज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना चाहते थे। I remember that lecture that night, someone dressed as people did back then, almost like in the hippie era, long robes with moons and stars and long hair, very carefully arranged, came in and sat erect during the entire lecture and then stared, glaring at Mr. Srila Prabhupada and said, what about Buddha? And so Srila Prabhupada said, what about Buddha? He just stared right back. And he said, well, can you see God? And Srila Prabhupada said, no, you are in the way. The funny thing is that whoever it was smiled after that and was not in the least bit annoyed and stayed around afterwards. एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद कक्षा दे रहे थे और एक हिप्पी के समय में लोग जिस प्रकार से अजीब तरीके से कपड़े पहनते थे, लंबे कपड़े, उसमें अलग अलग डिजाइन बनी हुई थी, सूरज चंद्रमा के जैसे, और लंबे लंबे बाल थे। और वो आके प्रभुपाद की कक्षा में बैठ गए और कक्षा में बैठने के बाद प्रभुपाद से चैलेंजिंग तरीके से प्रश्न करते हैं कि बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा, बुद्ध के बारे में क्या जानता है? तो फिर उसने पलट के पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, तुम बीच में खड़े हो इसलिए भगवान को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये सुन के वो व्यक्ति हंसने लगा और उसका जो चैलेंजिंग मूड था वो भी कम हो गया और फिर वो लेक्चर में बैठा रहा। Okay. So this is the one story that is longer than the other, so we'll pause it appropriately. Used to run a little store across the street called They annoyed and stayed around afterwards. My wife and I used to run a little store across the street called the Salami Store. And I did get to do a little bit for Srila Prabhupada by making him doubts for his afternoon refreshment when he woke up. So the last प्रभुजी का सेवा था कि एक सुरभि स्टोर नाम से एक स्थान था, वहाँ से प्रभुपाद के लिए वो नारियल लेके आते थे जब दोपहर में प्रभुपाद विश्राम करके उठते थे। Here, Srila Prabhupada was here with us in Los Angeles. GBC came to another devotee in I.T. Bhaskara and asked us if we would like the devotional service of being Srila Prabhupada's bodyguard. They had used us a lot in the past for taking sums of money to the bank like that. And for 4 or 5 years I carried a weapon all the time because of the rascals and things that had gone on and moving about and like that. तो वहाँ पे लॉस एंजलिस में प्रभुपाद थे और एक उस एरिया के जो जीबीसी थे उन्होंने आके भक्तों से पूछा कि प्रभुपाद के बॉडीगार्ड बनने की सेवा कौन लेना चाहता है। तो प्रभुजी अलग अलग भक्त विचार कर रहे थे। प्रभुजी ने सोचा कि उनके पास उनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उस समय उनके पास कुछ बंधुओं को इसके बारे में जानकारी दी थी। So they knew I was experienced with this. In one way, another, the year before, trying to do it 24 hours a day, they didn't think that was appropriate. So they asked if 3 of us would split the 24 hours up. So about the middle of the second week of doing this, Mr. Devotee Vaishnava, he and I we were hippies together, we were moving together, all of our service seemed to coincide together. We were sitting having lunch, and he was saying, you know that Srila Prabhupada, he does the same thing, the same time every day.
तो इस प्रकार से हुआ कि 3 भक्तों में उस सेवा को बांटा गया। 24 घंटे में से 8-8 घंटे की सेवा 3 भक्तों को बांटी गई। और प्रभु जी ने जिस भक्त के साथ ज्वाइन किया था, वो दोनों लोग पहले हिंदी थे, वो एक साथ इस्कॉन में आए थे, एक साथ सेवा करते थे। तो एक बार वो जब दोपहर में लंच ले रहे थे, तो वो बात कर रहे थे। उन भक्त ने बताया कि आपको पता है कि प्रभुपाद फिक्स समय पे फिक्स कार्य करते हैं, हर वो कार्य रेगुलरली उसी समय पे करते हैं। I said, yeah, it's amazing. You can almost set your watch. He goes, well, you know, someone gave him a brand new pair of slippers the other day. And all he wears them is from his room to the curtain at the temple room, and he takes them off. After class, he puts them on and wears them up and takes them off at his door every day. तो प्रभु जी ने बताया कि हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है। प्रभुपाद का टाइम इतना ज़्यादा फिक्स है कि उसके आधार पे हम अपनी घड़ी को मिला सकते हैं। फिर वो भक्त ने बताया कि प्रभुपाद को किसी ने एक चप्पल पहनने के लिए दी थी। उस चप्पल को प्रभुपाद हर दिन अपने कमरे से मंदिर में कक्षा लेने जाते हैं, तो पहन के जाते हैं और फिर लौट के उसको रूम में लेके आते हैं। I goes, yeah. He goes, well, he says, they're brand new. When I kind of looked at them last night, I got the model number and the manufacturer's name, and I bought another pair just exactly like them. तो वो एकदम नई चप्पल थी। प्रभु जी ने जब उस चप्पल को देखा, प्रभुपाद इसको पहन रहे थे, प्रभु जी ने उसके मॉडल नंबर, कंपनी का नंबर सब कुछ देख लिया और जाके उसी तरह से एक चप्पल खरीद के लाए। Well, what are you going to do with them? His feet are not the same size as your feet. He goes, well, tomorrow morning, he had the morning, I had the evening. He said, tomorrow morning when he goes down for class, he's going to wear his slippers down. I'm going to exchange them for my slippers. And then he'll wear my slippers back upstairs and I'll exchange them again. And I'll have a pair of slippers that Srila Prabhupada wore. Maybe just one time, but Srila Prabhupada will have worn my slippers. तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम इसका तो इन्होंने बोला कल सुबह जब प्रभुपाद अपनी चप्पल पहन के जाएंगे मंदिर में, तो उस समय मैं उनकी चप्पल एक्सचेंज कर लूँगा और जब प्रभुपाद लौट के आएंगे तो मैं अपनी चप्पल फिर से वहाँ पे एक्सचेंज कर लूँगा। तो इस तरह से कम जिंदगी में एक बार ऐसा होगा कि मेरी नई चप्पल को प्रभुपाद पहनेंगे। So I'm thinking, wow, that's a good idea. I said, so tomorrow I'm going to go out and buy a pair of slippers and we'll do the same thing the next day. तो इनको बहुत अच्छा लगा So the next, इनको बहुत अच्छा लगा आइडिया। उन्होंने सोचा कि कल मैं भी ऐसी चप्पल लेके आऊँगा, मैं भी ऐसे करूँगा। So the next day we do our service, we get together at lunch, and I said, well, did you get your slippers? He goes, yeah. I said, well, I said, where do I go buy mine? He said, you shouldn't do it. And I'm thinking, yeah, you got your slippers. तो अगले दिन जब लंच हुआ तो इन्होंने से पूछा कि अरे तुम्हें तुम्हारी चप्पल मिल गई? तो उसने बोला हाँ मिल गई। तो फिर इन्होंने बोला कि अरे मुझे बताओ मैं कहाँ से खरीदूँ, मैं भी खरीद के लाता हूँ। तो उस भक्त ने बोला अच्छा है तुम मत खरीदो। तो इन्होंने बोला नहीं तुम्हें तो तुम्हारी मिल गई, फिर तो मुझे क्यों नहीं खरीदनी थी? So he says, no, he said, let me tell you what happened. He says, Srila Prabhupada put his slippers on in the morning, and he came downstairs, he took them off the door of the temple room. I exchanged them. After class, Srila Prabhupada came back out, put his slippers on, my slippers. He wore them upstairs, and he wore them right into his room. He never took them off the door. I go, really? तो उन्होंने वो बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि प्रभुपाद नीचे आए, अपने रूम से निकल के मंदिर आए कक्षा देने के लिए, दर्शन के लिए, और मैंने अपनी चप्पल बदल में ली और प्रभुपाद ने चप्पल उतारी, फिर मैंने उस चप्पल को बदल दिया। फिर प्रभुपाद मेरी चप्पल पहन के गए और सामान्यतः प्रभुपाद वापस आते समय अपने रूम के बाहर चप्पल रख देते थे, परंतु प्रभुपाद ने इस बार चप्पल रखी नहीं, रूम के अंदर ही ले गए, कभी बाहर नहीं लेके आए नहीं। What did you do? And he says, well, I still get changed out, but thinking, what am I going to do now? He said, I was there, he said, about 5 minutes, and he said, this sannyasi came down, and he said, is your name Bashar? And he goes, yes. And he said, तो वो बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि प्रभुपाद तक मेरी चप्पल उतारेंगे। तो प्रभुपाद तो वहाँ घूमते हुए जब कर रहे थे और वो वेट करते करते पीछे से एक सन्यासी आके पूछते हैं कि आप क्या आप ही हैं? तो वो बताते हैं हाँ। well, Prabhupada has a message for you. Srila Prabhupada has a message for you. तो जी सन्यासी आके उनको बताते हैं कि प्रभुपाद ने आपके लिए एक संदेश दिया है।
He says, he wishes to thank you very much for the new slippers. प्रभुपाद ने आपको बोला है कि नई चप्पल भेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And you may keep the old slippers. आप पुरानी चप्पल अपने पास रख सकते हैं। But most importantly, he said it is not nice to play tricks on the spiritual master. उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने बोला है कि अच्छा नहीं है कि गुरु के साथ इस प्रकार से ट्रिक खेला जाए। One guy came pulling up on his bicycle, and he said, he looked at the sannyasis. He said to Srila Prabhupada, how come some of these guys are carrying sticks? तो एक लड़का आया, उसने सभी सन्यासी को देखा, सन्यासी को देख के वो प्रभुपाद से पूछते हैं कि ये सारे के सारे लोग इतना बड़ा डंडा क्यों लेके रखे हुए हैं? And Prabhupada said, what did he say? I was standing right next to Prabhupada. He said, what did he say? And I think Jamal said, he wants to know why we're carrying these sticks, Prabhupada. And he said, tell him to chase away dogs. And everybody just started laughing. The guy was kind of bewildered when we invited him to the temple. तो वो लड़के ने पूछा कि प्रभुपाद ने पूछा मुझसे, मैं प्रभुपाद के बगल में खड़ा हुआ था, प्रभुपाद ने मुझसे पूछा कि उसने क्या पूछा है? तो उसने प्रभुजी ने बताया कि शायद वो पूछ रहे हैं कि हम ये सन्यास लड़के क्यों लेके रखते हैं अपने साथ में। तो प्रभुपाद ने बोला उसको बताओ कि कुत्तों को भगाने के लिए इसको साथ में रखते हैं। और जब उसको बताया तो लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो हमने उसको मंदिर में बुलाया, फिर मंदिर में वो आया। One time I was a group and I came there and we were talking and somebody said something about India. And I said, oh, I'd like to go to India. And Prabhupada said, for what? Sightseeing? I couldn't get to. एक उमापति महाराज से एक व्यक्ति बात कर रहे थे भारत के बारे में, और भारत के बारे में सुन के महाराज ने बोला कि मैं भी भारत जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद वहाँ पे खड़े थे, प्रभुपाद बोला किस लिए जाना चाहते हो? तुम अच्छे अच्छे सीन देखना चाहते हो, इसलिए जाना चाहते हो? और मैं महाराज उसको आंसर नहीं कर पाए। I must have fallen into Maya. Srila Prabhupada answered that one. He said, you're always in Maya. Sometimes you fall into Krishna. ये प्रभुजी प्रभुपाद से पूछे थे कि मुझे लगता है कि मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया कि तुम तो हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी कृष्ण भक्ति कर लेते हो। That's a classic story. One time we were riding on the freeway, I don't know how way we were going, but there was a sign in LA that said Santa Cruz is 7 months of miles. And Prabhupada said, what is this Santa Cruz? So I told him, my literal understanding of the translation in Spanish, the name of what Jesus means, center of the cross, just literally. He said, yes, in India there's a place called Santa Cruz also that was founded by some missionaries. It comes from the word Shanta, which means simply. You can call me Shanta Bhaktivedanta. It seems so simple, but I'm visualizing Prabhupada. That's what it's at. Realize how we cultivated us in such simple little things, And yet you're implanting this knowledge, this devotion of love that we gladly taught by Him. It's just completely changed our life. So we're so grateful. तो लॉस एंजलिस में एक स्थान है सांता क्रूज नाम से। तो वहाँ से जब एक बार कार में जा रहे थे तो ये प्रभुपाद ने पूछा कि इस स्थान का ये सांता क्रूज का क्या मतलब होता है? तो इन्होंने बताया, इनको जितना पता था उसके आधार पर इन्होंने बताया कि सांता क्लॉज जो है वो जीसस के नाम को बताता है, कि उसका कुछ मीनिंग होता है कि सेंट ऑफ द क्रॉस, जो जीसस को निरूपित करता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ मुझे याद है, मुंबई भारत में भी एक ऐसी जगह है जो सांता क्रूज नाम से जानी जाती है, जिसको किसी क्रिश्चियन मिशनरी ने बनाया था। फिर प्रभुपाद ने बोला कि प्रभुपाद को सांता क्लॉज में संत नाम अच्छा लगा, तो प्रभुपाद बोला आप मुझे संता भक्तिवेदांत स्वामी बोल सकते हैं। And you can give his purport about how Prabhupada, I'll play it again. I don't think he translated that. His realization. Yeah, so I'm visualizing Prabhupada, it's just what it's at. Realize how we cultivated us in such simple little things, And yet you're implanting this knowledge, this devotion of love that we gladly taught by Him. It's just completely changed our life. So we're so grateful.
प्रभुजी बता रहे हैं कि मैं केवल प्रभुपाद के स्वभाव के बारे में सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद ने कितनी आसानी से हम लोगों को ये वस्तुएं सिखाई, और उसके साथ साथ प्रभुपाद ने इतना सारा सब कुछ हमें सिद्धांत भी बताया और सबको हम सभी को पर्सनली सिखाया। तो इसके लिए हम प्रभुपाद के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। And then I asked, we learned that dinosaurs once ruled the earth. Is that true? So he said, how could they rule? They have no intelligence. So he would make the most complicated philosophical understandings very clear and simple. In fact, once a devotee asked him, how is it that you make this complicated philosophy so simple and clear? So he said, because it is simple. God is great, you are not great, therefore you are not God, and you should surrender to God. तो जनरल माता जिस तरह से बता रही है कि एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि सभी लोग डायनासोर के बारे में जानते थे, तो प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद का ऐसा समय था जब डायनासोर सभी पे शासन करते थे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो शासन कैसे कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर तो बुद्धि नहीं थी, बिना बुद्धि के शासन कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद की एक विशेषता थी कि बहुत कठिन जो विषय थे उनको बहुत आसान बना देते। तो एक बार हम उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद ऐसा आप कैसे करते हैं कि इतने कठिन सिद्धांतों को आप इतनी आसानी से समझा देते हैं। तो प्रभुपाद बताया कि बहुत आसान है, हमें केवल ये समझना है कि भगवान बहुत महान है और हम महान नहीं है, इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बहुत आसान सिद्धांत है। Another time I was being interviewed by two young fellows, and they were, I forget what it was for, radio and television. There wasn't a camera. And there were two of them. I forget what it was all about. But they asked Prabhupada, have you seen God? I was like, what do you think? And Prabhupada said, if you go to my goal, shouldn't you educate yourself first? What is gold? And then if someone says it's gold, you'll know. So you ask me, see, how will you know? Whether you need to know who God is, what are the qualifications. Then you'll know whether my answer is right or wrong. So, do you know who God is and do you know who's qualified to see Him? And they said, no. Then you have to accept whatever I say, because you don't know. So for better or worse, whatever I say you have to accept. And will you do that? Yes. Then I have seen Him. तो ये एक बार है जब दो रिपोर्टर प्रभुपाद का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, और ये पता नहीं वीडियो के लिए था, टेलीविजन के लिए था, परंतु उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। और उन लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा आपको क्या लगता है। प्रभुपाद ने उनसे ये भी पूछा कि आपको क्या पता है कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, उनको कैसे देखा जा सकता है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता है। तो प्रभुपाद ने बोला फिर आप ये कैसे पता करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि गलत है, जब आपको खुद ही नहीं पता है। पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए भगवान के बारे में, तभी तो आप बता पाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। फिर प्रभुपाद ने पूछा आपको पता है, तो उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं पता। तो प्रभुपाद बोला फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपको भी नहीं पता है, तो आप मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हम तैयार हैं। तब फिर प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक है, तब मैंने भगवान को देखा। In the early days, he was giving a lecture at 26th Avenue, and it was full of hippies. He was sitting up, maybe like up here, a little lower, and everyone, people right near him. And one girl very near to him, she kept raising her hands. And Prabhupada deliberately ignored her because he could understand she was going to say something foolish. So he was trying to ignore her. But she was persistent, so finally Prabhupada recognized her. He said, yeah. Well, Swamiji, aren't there many ways to God? And Prabhupada said, no. There's only one way. Just like food. You can't put it here or here. It must go here.
And the whole place, of course, burst into roaring laughter. I was a photographer. तो एक बार प्रभुपाद न्यूयॉर्क में सेकेंड लेवल में कक्षा ले रहे थे और सारे पूरा रूम भीड़ से भरा हुआ था। तो उसमें एक लड़की थी जो कि बार बार अपना हाथ उठा रही थी प्रश्न पूछने के लिए, पर प्रभुपाद जानते थे कि जो पूछेगी मूर्खता पूर्ण पूछेगी। प्रभुपाद उसको पहले देख नहीं रहे थे और वो लगातार हाथ उठाते रहे तो प्रभुपाद ने उससे पूछा कि क्या प्रश्न है। तो उसने प्रभुपाद से बोला, स्वामी जी क्या भगवान को पाने के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं? तो प्रभुपाद बोला, नहीं, बहुत सारे तरीके नहीं होते, एक ही तरीका होता है। जैसे भोजन का खाने का एक ही तरीका होता है, आप कान में नहीं खा सकते हो, नाक में नहीं डाल सकते हो, आँख में नहीं डाल सकते हो, केवल मुंह में डालोगे तो भोजन खा सकते हो। उसी तरह से भगवान को पाने का भी एक ही तरीका होता है। There's only one way. Just like food. You can't put it here or here. It must go here. And the whole place, of course, burst into roaring laughter. I was a photographer at UTD for a while. ये प्रभुपाद ने बताया तो पूरी कक्षा जो है वो जोर से हंसने लगी। I'm just rewinding it not to miss the beginning of the next one. There's only one way. Just like food. Sorry. You can't put it here or here. It must go here. And the whole place, of course, burst into roaring laughter. I was a photographer for BTD for a while. In London at Bhaktivedanta Manor morning walk, I ran ahead with my camera, sprang up the side of an embankment to get a good angle, and slid right down on my butt. Prabhupada walked by, looked down, and said, "Don't take unnecessary risks." तो प्रभुजी को एक बार भक्तिवेदांत मैंने में फोटोग्राफी का सेवा था। तो जो प्रभुपाद के साथ जब मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे तो प्रभुजी एकदम दौड़ते आगे गए थे, उनको अच्छा सा व्यू मिले और अच्छा फोटो खींचे। तो एकदम जाते गड्ढे में गिर गए, कीचड़ में गिर गए। प्रभुपाद जब बगल से निकले तो प्रभुपाद ने बोला, इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। One summer, Srila Prabhupada was visiting with us and it was very hot. So we wanted to go outside. And at that time, there was no garden, a nice spot for him to sit. So we went out and sat on the lawn in a chair on Graham Street, which is the business street. And all these cars were sitting by, and Prabhupada was sitting on the lawn in a chair, with just a sannyas, what do you call it? With a top, whatever, sannyasi top. Someone was standing with a peacock fan. We were sitting out around Prabhupada, and this man walked by on the sidewalk. And when he saw Prabhupada, he just did a double take. And it was more than he could handle. It was just after he looked, and then he walked by and he just couldn't handle it. So he walked back in a very demanding voice and said to Prabhupada, "Why is that man fanning me?" And Prabhupada was just sitting very relaxed in the chair. And he just said, "It is hot." So this man he didn't know what to say. He just turned on his heel and walked off. So Prabhupada had demolished his whole irritation with 2 words, or 3 words. "It is hot." That was it. So that was kind of a humorous. गर्मी का समय था, प्रभुपाद एक बार आए तो उनको गर्मी लग रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला कि बाहर चलते हैं, पर तो बाहर कोई गार्डन बगीचा नहीं था। तो प्रभुपाद रास्ते का बगल में जो फुटपाथ होता है जहाँ पे लोग चलते हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी थी, वहाँ पे प्रभुपाद बैठे और कार वहाँ पे आ रही थी जा रही थी। एक भक्त प्रभुपाद के ऊपर छाता लगाया हुआ था और वहाँ से एक व्यक्ति निकला, एक भक्त प्रभुपाद को पंखा कर रहा था। तो वहाँ से एक व्यक्ति निकला, उसने देखा कि इस प्रकार से एक भक्त को पंखा कर रहा है, छाता ऊपर लगा के खड़ा है और कुछ भक्त बैठे हैं। तो उसको देख के एकदम आश्चर्य जैसा हुआ और वो आगे निकला, परंतु फिर पीछे लौट के आया और एकदम गुस्से में प्रभुपाद से बोलता है कि क्यों वो व्यक्ति आपको पंखा झल रहा है, क्यों आपको पंखा कर रहा है। प्रभुपाद ने उसको सिंपल आंसर दिया कि बहुत गर्मी है इसलिए। तो उसका बहुत गुस्सा था, परंतु वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और चला गया।
I know your translations are brilliant. Everyone's laughing, so you're telling a good story. Thank you. We only have less than 4 minutes left of stories, so I think we should be okay. That was good, Prabhupada. He's sitting up front. He said, I can't understand why all these young people are bowing down to you. Yeah, it's karma is just coming. The Prabhupada's answer is, just as you are thinking they shouldn't bow down, they are thinking that you should bow down. एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इतने जवान लोग आपको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, आपके सामने क्यों झुक रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जैसे तुम सोच रहे हो कि उन लोगों को मेरे सामने झुक के प्रणाम नहीं करना चाहिए, वैसे वो लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें मेरे सामने झुक के प्रणाम करना चाहिए। He said, this is a democracy, is it not? The majority is bowing down. डेमोक्रेसी है और यहाँ पे मेजॉरिटी मुझे प्रणाम कर रही है तो तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। Yeah, Prabhupada was always perfect like that. So anyways, we played You're Not That Blind in Kingsbury. It was a little different than we ended up on the record, you know. So we listened to that, and then we played bottom here. I think that's what we did. We just kind of did that and went through it, you know. And he sang, he listened to it, he seemed to like what he was hearing, you know. And he said, so, something like that. I said, well, I said, some of the big men don't think this is such a good idea. And he said, sometimes you have to let cows move. What he said, you know. And then he said, do it, it'll be successful. So do you understand the concept here? Okay, this is this devotee is Mangalananda Prabhu. And in the early days in the 70s, he's a professional musician. And he writes songs. तो ये भक्त जो है ये उस समय एक म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे और गीतों को गाते थे और बजाते थे। So he produced this first album, which he's talking about here, and he actually one another quality of a Vaishnava is he is poetic, and Mangalananda is a poet, a brilliant songwriter. तो उन्होंने अपना पहला एल्बम लिखा था और वैष्णव का एक और गुण होता है कि वैष्णव गायक कवि होते हैं, तो वो गुण भी उनके अंदर था। So this album he produced was at a time when devotees were very orthodox, but his songs had an upbeat folk and rock and roll composition. तो उस समय जब ये गीत लिखा उन्होंने, तो उस समय भक्त लोग बहुत ज़्यादा पारंपरिक होते थे, परंतु ये जो गीत था ये कुछ रॉक एंड रोल से का इसमें मिक्स किया गया था। The lyrics were totally Krishna conscious, talking about karma, reincarnation. Every song was philosophically sound. तो जो गीत था, जो गीत लिखा हुआ था, वो तो पूरा कृष्ण भावना आधारित था, उन्हीं कल्प के सिद्धांतों को, बाकी कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को बताया गया था। So because there were some orthodox leaders within the society, they felt that if devotees got attracted to the music, which was more folk and rock and roll, then they would fall down into Maya. वहाँ पे कुछ ऑर्थोडॉक्स जो लीडर थे, उन्होंने सोचा कि कुछ रूढ़िवादी जो लीडर थे, उन्होंने सोचा कि अगर भक्त लोग इसको इस प्रकार के संगीत को सुनेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। So these so-called advanced devotees were complaining that
this should not be produced or distributed, and they were complaining to Prabhupada. तो ये भक्त लोग बता रहे थे कि इस प्रकार का एल्बम बनाना नहीं चाहिए और इसको रिलीज नहीं करना चाहिए, वो प्रभुपाद से इस प्रकार से कंप्लेन कर रहे थे. And that's why Prabhupada said, sometimes you have to let cows moo. Moo means if my throat wasn't so bad, I would try to imitate the sound of a cow mooing. You just twist it. प्रभुपाद ने बोला कि कभी-कभी गाय कुछ मुंह से आवाज निकालती है, उसको निकालने देना चाहिए. You understand? Who does not understand? Okay. Sometimes it gets lost in translation. Someone brought ice cream from New Vrindavan to Prabhupada, and the Vrindavan finds as the Prabhupada took it right on a teaspoon and ate ice cream from New Vrindavan. And somehow they had dry ice, they kept it cold. And they brought him a ring they had made. As soon as we showed Prabhupada the ring, he said, "So, where's the bride?" He said, "Where's the bride?" ये न्यू वृंदावन में प्रभुपाद को कुछ भक्तों ने आइसक्रीम पहले खाने के लिए दिया और फिर महाराज प्रभुपाद के लिए एक अंगूठी लेके आते हैं और प्रभुपाद जब उस अंगूठी को देखते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दुल्हन कहाँ है, अंगूठी तो आ गई पर दुल्हन कहाँ है. So try to understand Prabhupada throughout his life and throughout the time he was with us. Up to his final days, he had his wits about him and his sense of humor was there at all times. तो कभी-कभी भक्त लोग इस प्रभुपाद के स्वभाव को समझ नहीं पाते थे, पर प्रभुपाद पूरे जीवन उनके पास ये स्वभाव था, मजाक करने का स्वभाव, उसके द्वारा समझाने का स्वभाव. And this is the last story. At the end of his lecture, he asked if there were any questions. One very old lady asked why. She was practically in tears. She cried out, "Why have you come so late?" She was really sad that she had missed the opportunity to take the Krishna consciousness when she was younger. And Prabhupada said, "Because you are so late." So, on another occasion, that same question was asked by another old person, and Prabhupada answered in a different way. He said, when the question was, "Why have you come so late?" And he said, "Because better late than never." So those stay in my mind, that Krishna sends the pure devotee when someone's ready, and if you're not ready, then Krishna won't send. ये एक घटना है, एक बहुत वृद्ध औरत ने प्रभुपाद से पूछा कि ऑलमोस्ट रोते हुए प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप इतना लेट क्यों आए यहाँ पे. तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया क्योंकि आप बहुत लेट हो गए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने में. और इसी तरह से जब दूसरी बार एक व्यक्ति ने पूछा, वृद्ध व्यक्ति ने, कि प्रभुपाद आप इतना लेट क्यों आए, तो प्रभुपाद ने दूसरा उत्तर दिया कि कभी नहीं आने से अच्छा है लेट आना, बेटर लेट देन नेवर. तो उससे प्रभुजी ये समझे कि जब हम तैयार होते हैं तब भगवान कृष्ण शुद्ध भक्त को भेजते हैं. अगर हम तैयार नहीं हैं तो हो सकता है भगवान को नहीं भेजें.
Srila Prabhupada ki jai. Thank you for listening. Any other questions or comments? अगर कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। Good. Anyway, thank you for listening. Just a bit of self-promotion, shameless promotion. I don't know if everyone was here for the introduction to this series, but I've been touring around the world for 32 years, and I've collected over 400 devotees, Prabhupada disciples, such as you've seen here, and produced 6 books from these transcribed interviews, which translates to 150 hours of viewing pleasure and over 4,000 separate anecdotes. तो प्रभुजी इस प्रकार ये सेवा उन्होंने स्वीकार किया है। पिछले 35-40 साल से वो पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं और प्रभुपाद के शिष्यों से इस प्रकार से प्रभुपाद की स्मृतियाँ बनाते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं। उसके आधार पर प्रभुजी ने 6 पुस्तकें भी बनाई हैं, जो कि इन वीडियो का लिखित वर्णन है, और साथ-साथ 150 घंटे के इस प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाए हैं। So if you want to feel inspired every day, if you just watch a half hour of these memories, it will take you 10 months to finish watching. तो अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, हर दिन आधा घंटे भी सुनना चाहते हैं, तो भी आपको 10 महीने लगेंगे इसको सुनने में। So in that regard, excuse me, because I don't come to India that often, I brought with me 2 flash drives, each one containing all 95 videos. And the Delhi ashram, they bought one, and I have one extra one if you want to encourage the leaders that be to invest in it for your ashram here at the temple. तो प्रभुजी वो फ्लैश ड्राइव में वो सारा संग्रह लेके साथ में चलते हैं, और प्रभुजी भारत में इतना नहीं आते हैं बहुत, तो अभी प्रभुजी के पास 2 फ्लैश ड्राइव थे उस तरह से, उसमें से एक उन्होंने दिल्ली में दे दी, एक अभी है। तो भक्त लोग और आश्रम के भक्त अगर उसको लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। And as such, I'm willing to take off $100 from the price on the website. Because I have one and I'm leaving today for America, who's ever in charge of writing checks, I'm making the offer with an additional $100 off the listed price on the website. तो चूंकि प्रभुजी अमेरिका जा रहे हैं, तो वो उसको दे के जाना चाहते हैं, तो उसका जो प्राइस है उससे $100 कम करके प्रभुजी डिस्काउंट में भी देने के लिए तैयार है। So if you found any inspiration, sign a petition and hand it to the ones in charge. तो अगर आपको ये देखना अच्छा लगा है और आप इसको लेना चाहते हैं तो बता सकते हैं। Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. They request you to come more often. Okay.